Maharashtra University is a prestigious university to be doing law from. In this video, I am going to tell you everything about the MHCET LLB examination, wherein I am going to cover what is the eligibility, paper pattern, criteria, syllabus, and everything. So let's start with this video. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. Starting with the first bit, let's look at the eligibility of this paper. So basically, you need to have minimum 45% marks in your grade 12th if you are from open SCB EWS category, and also 40% marks if you are from SC or ST category, and 42% aggregate if you are from a category that is belonging to any of these, which includes your OBC category. Now these have to be there. Apart from this, candidates जिनको अपना passing certificate और first degree certificate मिला है after studies in distance or correspondence method of education, then they are also eligible for this exam. People from open school of learning are also eligible for this exam. However, अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी से अपना 12th किया है बट यू डू नॉट हैव एनी बेसिक क्वालिफिकेशन, दैट इज यू डू नॉट हैव standard 10th qualification, then you are not eligible for this examination. Then moving forward, इस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है? What is the paper pattern for this examination? Let us see. So the questions will be in MCQ format. MCQ format में होने वाला है. There is no negative marking. So this is a good criteria कि यहाँ पर negative marking नहीं है. So you should attempt all the questions because obviously negative marking nahi hai, so there is no harm in doing all the questions. Then the time allocated for this exam is 2 hours. 2 घंटे का paper है. The questions will be in English and in Marathi. Now the university also says that once you prepare and you apply for the online set examination, then you will be given a mock test link for practice. Because MHCET के papers जो हैं वो 3 year 5 year दोनों के लिए ही नहीं मिलते हैं आसानी से. Previous year papers you cannot find anywhere, so they have their own mock test link which they provide to you in order to let you have an understanding as to what kind of questions will be there, what is the difficulty level, what is the paper pattern. Breaking this down, let us see. Time, as I said earlier, 2 hours का paper है. It will be of 150 marks, so there are 150 questions. 1 mark का एक question है, negative marking नहीं है. What are the subjects that you need to cover for this examination? Legal aptitude, general awareness and current affairs, then aptitude, English and maths. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इनका जो क्राइटेरिया है, इनका जो अलॉटमेंट है मार्क्स का, वो किस तरह से है. सो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग से आपको आएंगे 40 क्वेश्चंस. देन जीए विद करंट अफेयर्स से 30 क्वेश्चंस. लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो आपका एप्टीट्यूड है वो है 40 मार्क्स का, एंड इंग्लिश से 30 एंड मैथ्स से 10. So total 150 questions, as I said, will be asked. As you can see here, legal and logical and analytical reasoning are the most important parts for this examination. English and GA are the second most important. Obviously, you cannot leave them. And math सबसे कम है, जिसका criteria जो weightage है वो है 10 marks का. Now, moving forward with the syllabus. What is the syllabus? When we speak of legal aptitude and legal reasoning, this test will check your interest in the study of law, legal aptitude and प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. सो क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से फ्रेम होंगे कि लीगल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं वहां पे आपको सेट ऑफ फैक्ट और प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जहां पर एक प्रिंसिपल गिवन होगा, देयर विल बी फैक्ट्स एंड यू हैव टू कम टू अ रीजनेबल कंक्लूजन. अब इस पे लीगल रीजनिंग पे आई ऑलरेडी हैव अ सेपरेट वीडियो वेयर आई हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. यू कैन वॉच दैट वीडियो. देन आपकी स्टडी ऑफ लॉ और लीगल एप्टीट्यूड भी चेक होएगा यहाँ पे. वहां पे आपका चेक हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, देन लीगल टर्म्स, मैक्सिम्स, इन सब की क्या नॉलेज है आपको. लीगल करंट अफेयर्स विल बी चेक. यू शुड बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स और एनीथिंग important that has happened in the legal field. Apart from this, some basic knowledge of tort law, IPC, criminal law can also be obtained for this examination. Contract law, very basic needs to be done because mostly what they ask is from these areas only. Now, moving forward,
Let's look at general knowledge with current affairs. तो यहाँ पर general knowledge में they've already mentioned that history you need to do ancient, medieval and modern. Then geography, general science, economics, civics and current affairs of the past 1 year. So they've clearly specified कि past 1 year का current affairs करना है. So the whole preparation for this particular section of this examination should revolve around these categories and the subject. Basically, what is the objective? The objective is to assess the knowledge of recent event and happenings of the world. So awareness of the world में हमारा आता है इंटरनेशनल न्यूज़. सो इंटरनेशनल न्यूज़ में भी आपको सब कवर करने की ज़रूरत है, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी. स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन कवर इट फ्रॉम लूसेंट बुक और एनी सेल्फ गाइड. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो व्हेन देयर स्carcity ऑफ टाइम यू कैन यूज़ एनी सेल्फ गाइड बुक, and if you have time then cover it from lucent. For current affairs, refer to newspaper every day, and otherwise you can enroll for some monthly series, you can check yearly series. For this you can refer to different sources, you can refer to GK Today, or also you can check out our modules available on our website, which is available for your legal portion as well. लीगल पोर्शन में ये जो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, दिस यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम अ सेल्फ गाइड बुक यूनिवर्सल सिंगल. इनमें काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं लीगल रीजनिंग के, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर. हाउएवर जो कॉन्सेप्ट लगाना है, जो अप्रोच लगानी है टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, डू चेक द वीडियो ऑफ माइन, बिकॉज इन दीज type of questions your prior knowledge of law is not important and should not be applied. Then moving forward, logical and analytical reasoning. अब ये जो subject है, this will check your ability to identify patterns. So sequence and series वाले जो questions होते हैं वो logical links आपको find out करने हैं and rectify illogical arguments. So statement conclusion based जो questions होते हैं that you need to do. Then analogies, कुछ वर्ड्स दिए होते हैं एंड आपसे उसमें एनालॉजी पूछी जाती है. completing arguments, drawing well supported conclusions, reasoning by analogy, applying principles or rules. This will also determine whether you can understand the structural relationship and draw conclusions. So जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम फैमिली ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, देन ब्लड रिलेशंस, बेसिकली ब्लड रिलेशंस के जो क्वेश्चंस हम बोलते हैं, देन पजल, सिलोजिज्म, डायरेक्शंस, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं टू include to ask you for reasoning deductively from the set of statements and rules that describe relationship amongst persons, things or events. So syllogism, जैसा कि मैंने बोला, इसके भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं. इस टॉपिक को कवर करने के लिए यू कैन रेफर टू R.S. Agarwal. It's a popular book and you can cover these parts easily from there. Basically, you need to practice as many questions as you can. देन इंग्लिश की बात करें इस सेक्शन में, वोकैबुलरी में आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, proficiency as to idioms and phrases, one word substitution, sentence improvement, sentence rearrangement, fill in the blanks, ये पूछा जाएगा. Then common errors, spotting errors, inappropriate usage of words, spelling mistake and comprehension. तो ये सारी चीज़ें आपके इंग्लिश सेक्शन में से टेस्ट होंगी. इंग्लिश के लिए the basic books that you need to refer are Word Power Made Easy by Norman Lewis for this part, for vocabulary part, and for your grammar you can refer to Wren and Martin. Then moving forward, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड. इस सेक्शन में आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट होगी. द क्वेश्चंस विल बी सेट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड लेवल ऑफ वेरियस टॉपिक्स, जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम इन वर्क, अलजेब्रा, एवरेजेस ऑफ वेन डायग्राम से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. मैथ्स के लिए यू कैन रेफर टू अ बेसिक एनसीईआरटी बुक, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. यू कैन ऑल्सो रेफर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स टू सॉल्व देम. ऑब्वियसली एमएचसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप MHCET के ही पेपर्स करें. यू कैन डू पेपर्स, यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, एज मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम अदर एग्जाम्स एज वेल, एलिट, स्लैट,
then BHU, यहाँ से भी आप questions pick करके you can practice for this examination because all in all जो syllabus होता है in exams का वो almost same होता है, the topics are almost the same, so you will find questions to cover. So with this we come to the end of this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, do hit the like button. If you are new to this channel, subscribe to this channel for more updates. Follow us on Instagram where we keep posting interesting content. And if you have any doubts and queries, you can mention the same in the comment box below.